टेस्ट करो वन बाय वन. Those who have not completed IG2, I don't know what I can tell you. क्योंकि अभी आप एक महीने क्लास खत्म होने के बाद अगर IG2 बनाएंगे, बहुत ही गंदा IG2 बनाने वाले हो आप. ओके, एंड आई विल नॉट हैव टाइम टू गिव यू फीडबैक ऑल्सो बिकॉज आप बहुत लेट कर दिए ऑलरेडी. सो शिफ्टेड कैंडिडेट, जो लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिए, IG1 पे चले आइए. ओके, एंड ट्राई टू स्पेंड टाइम फॉर रिविजन एंड मॉक टेस्ट. ओके, आफ्टर एवरी फुल एंड मॉक टेस्ट आई विल सेंड यू सैम्पल आंसर. वो सैम्पल आंसर आप देखो, मेनी ऑफ यू are scoring more than 75 marks in the mock test. Like, who has scored more than 75 marks in the full and mock test? Hi, sir. Okay, others? Who else? So, जब आपको मैं सैम्पल आंसर देता हूँ ना, don't try to do any kind of copy from other learners' answer. You be yourself. आप जो हो आप वही रहो. Just try to improve your content. Okay, आप अपना content को improve करने की कोशिश करो. That's it. Okay, but don't try to copy the way the other people are following. Okay, you remain yourself. Simple. Okay, आप जो हो आप हो, आप अपना पैटर्न को फॉलो करो. But just you can improve your content. कौन से क्वेश्चन आप गलती कर रहे हो ना, वो देखो जाकर how he has written. Okay, he will also not score 100 ना, he has scored 75 and above. So distinction का पेपर में भी गलती रहती है. That is what I'm telling you. Okay, all right. Now let me come to the scenario. So it's a scenario related to car manufacturing organization. So we'll go through the scenario, and if I miss any positive or negative point, then you guys can remind me. Okay. So a small car manufacturing organization site is comprised of several buildings, including a factory containing a production line, a machinery workshop where metal tools are machined, and an administrative office. I told you during the class that in the scenario-based question, they generally first give you information about the nature of the business, right? So what business you are doing, layout of the workplace, how many workers are working, what is the timing of shift, what is the nature of work. So that is what they're telling, that it's a car manufacturing organization where you have several buildings, including a factory. In the factory, you have a production line, you have machinery workshop where you are using metal tools, okay, and you have administrative office. So there are 150 workers, including 3 health and safety supervisor. Can I make this point green? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Green, sir. Green. Positive point. 3 health and safety supervisor. So इसको green तो कर सकते हैं. So this is my first positive point, that they have appointed 3 safety supervisor. Can you tell me this point is related to which point of OG? Control, sir. Yes, sir. Control, sir. Control, sir. Again, Control, sir. Control. current batch this weekend, this Saturday, Sunday, please complete your full revision because Monday से IG2 में चले जाएंगे हम लोग. Okay. So when we go to IG2, आपको फिर time नहीं रहेगा revision करने के लिए. So this OG factor we have discussed, and here this is related to control. Whenever safety professionals are appointed, that point is related to control. Okay. Yes, sir. Now, a workshop manager and a site manager. So here you have workshop manager and a site manager you have, and 3 safety supervisors are there. Okay. Robotic arms have recently been installed in the painting section of the production line. Robotic arm kya? Again, please remember one thing. On the day of exam, if you get the scenario where you are not sure about any particular equipment, you are not sure about any particular word, so you can go and check. Okay, you can go and check that. So robotic arm generally we use in the manufacturing unit. Okay, so car manufacturing, there will be manual effort. Now what they did, they have installed robotic arm. Can I make it green? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me this Positive point is related task to point, which sir. point of OG? Positive, sir. Very good. This point is Task. task point. Job factor में task पढ़ा है आपको. Yes, right? sir. That you minimize human effort by providing machinery. So what they are doing? They are providing machinery to reduce your human effort. So this is a task factor. This is the beauty of revision. Those who revise, the point will be very much apparent to them, very much visible to them. इसके लिए मैं revision के लिए इतना बार-बार आपको बोलता हूँ. Okay. So they have, this is another positive point, that they are using some machinery technology to reduce human effort. Okay. These robots apply paint, coating and sealant to the car bodies. So आप देख रहे हो ना, अगर ये robotic काम नहीं रहता, so who will apply this paint, coating, sealant to the car? Workers. You have installed robotic arm. Now workers will be prevented to apply their body force, right? That is why this point we marked green. Okay. These tasks were previously done manually. आप देख रहे हो पहले manually कर रहे थे. Okay. Earlier they were doing manually. Now they are introduced this robotic arm. Can you tell me, in your company you were doing some task manually, खुद से कर रहे थे worker. Now you have replaced this work with some technology, some equipment. इसको क्या बोलते हैं? IG1 में कौन सा टॉपिक है ये? Management of change.
Management No, of Change of This procedure, is sir. this is a management of change. Change of MOC topic experiment. we have discussed, right? We have Yes, discussed sir. MOC topic, management of change. So here actually they have introduced a change. And it's a manufacturing company. So here actually MOC is applicable. Okay. So they have introduced a change. इसके लिए मैं आपको रिवीजन करने के लिए बोलता हूँ. When you revise properly, from one point, many angle you will be able to think. Okay. So यहाँ पे एक change हुआ है. Okay. So आगे जाकर हम देख सकते हैं कि MOC कुछ किया है या उसके बारे में कुछ बात नहीं किया है. Okay. Next, the new robotic arms have a wider area of movement than the robotic arms already used in other sections of the production line. Can I mark it? Red. Yes, Yes, sir. Red, Yes, sir, sir. Red. क्या रेड है इसमें? रेड है sir, सर wider वाइट area बहुत of ज्यादा movement. बड़ा है सर Yes, sir. This is green, sir. Actually, It's green, sir. मूवमेंट एरिया wide area. Wide area, ये sir. ये रोबोटिक आर्म के लिए वाइडर एरिया होना अच्छा है या कंजेस्टेड एरिया होना अच्छा है? Wider, sir. Wider area, sir. wider Wide area, sir. Congested area. कंजेस्टेड एरिया सर सही है कंजेस्टेड एरिया क्यों? क्योंकि सर रिक्वायरमेंट नहीं है उतना ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डालेंगे ना अगर कंजेस्टेड होगा तो जब रोबोटिक आर्म मूव करेगा ना तो कोलिजन हो जाएगा रोबोटिक आर्म का. Is occupied the another section. Two robotic arm will collide with each other. ओह आपका इस हिसाब से तो सर वाइडर ही सही है आपका वाइड होना चाहिए ना. अगर जगह बराबर नहीं रहेगा तो कोलिजन हो जाएगा. So here they have wider area. So that's a positive point. Okay, again I will tell you one more thing. अगर एक पॉइंट में आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है ना कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसको ब्लैक ही मार्क करके रख दो. बाद में पूरा सिनेरियो पढ़ने के बाद अगर आप देखेंगे ना तो आपको कुछ क्लू मिल जाएगा. ओके, सो इफ यू आर नॉट श्योर, put it black. Later, after completing entire scenario, you can see the picture will be clear to you. Then you will be able to decide कि ये रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए. हाँ, तो उसको ही कमिटमेंट बोलते हैं ना. सेफ्टी को लेकर सीरियस नहीं है, उसको ही कमिटमेंट बोलते हैं. कमिटमेंट में जाके पढ़िए. आप लोगों को जो मैं ओजी फैक्टर पढ़ाया, क्या बोला देखिए ना, सेफ्टी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी. सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है तो कमिटेड है, सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी नहीं है तो कमिटमेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट. They did, however, trust you to be responsible for health and safety in the workshop At as you number had four. recently. At number Sorry? 4. However, one second, I think, did I miss anything here? Okay, no. No, sir. No, sometimes when you copy scenario, sometimes you may miss something. That is what I'm doing. They did, however, trust you to be responsible for health and safety in the workshop as you had recently gained a health and safety qualification. So what they're doing, they have the trust that you will take care of safety without their support. So that is an unrealistic expectation. So they are not interacting with you. This workshop manager is not interacting with safety professional, and they trust कि आपको promotion दिया ना तो आप देख लोगे. Safety is not the responsibility of safety officer only or safety supervisor only. Okay. Next, now they are giving you about some information related to machinery workshop. So at the beginning of this scenario, they already said कि यहाँ पे क्या-क्या है. यहाँ पे बता दिया कि प्रोडक्शन लाइन है और मशीनरी वर्कशॉप है और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है. ये वर्कशॉप का ये वर्कप्लेस का आपको लेआउट बता दिया ऑलरेडी. Now here they are talking about machinery workshop. The Sir, I machinery have a question, workshop, please. yes. Sir, in the last line, they have said that you had recently gained a health and safety qualification. Hmm. Could you please describe? They are telling what? They are telling that because you have gained a safety qualification. Suppose this guy recently passed Nebosh exam. So this workshop manager is telling that because you are now qualified safety professional, so they trust that you will be able to take care of safety. Okay, that is what they're telling. They're telling that because you have gained some safety qualification. Over confidence. आप एक सेफ्टी क्वालिफिकेशन ले लियो तो वो ट्रस्ट करे कि आप तो सेफ्टी में क्वालिफाइड हो ना तो आप सेफ्टी का देख लेंगे. दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ मशीनरी वर्कशॉप. द मशीनरी वर्कशॉप वाज बिल्ट 5 years ago. It has designated walkways and working areas painted on the floor. Green, sir. Green. Green. Green, sir. walkway और वर्किंग एरिया को पेंट करके रखा है ना, इट्स अ पॉजिटिव थिंग. ओके, बराबर मार्किंग करके रखा है. सो दिस इज आवर ग्रीन पॉइंट नंबर 6. Okay, next. It also has a custom-made pneumatic vacuum system to extract the metal chips and shaving swarf produced during metal working. Green, sir. Green. This swarf means अभी कोई चीज का मतलब पता नहीं ना, जाके गूगल में चेक कीजिए, आप लोग का ये ओपन बुक एग्जाम है. Swarf means the metal dust after drilling. Whatever metal dust you get, that is called swarf. इसको swarf बोलते हैं. Drilling के बाद ये जो metal dust is called swarf. Okay, so what they did to collect this swarf, they have provided one vacuum extractor. क्या किया है? They have provided a pneumatic vacuum system to extract this metal chips and swarf. Okay, so this is also a positive point. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Good resources has been provided to collect the metal dust. Okay, next. On your first inspection of the workshop, you have to
step around piles of swarf in the walkways. Red color. Negative, sir. Right, sir. Which point of OG? Red, Which red. point of OG? Great, sir. Poor housekeeping. Point of Poor OG. Housekeeping, housekeeping. sir. housekeeping. There was no point in OG related to Work environment. Poor environment. environment बोलो. Poor housekeeping बोलकर OG में मैं कोई भी point नहीं पढ़ाया. All of you please keep yourself muted. Anwar Khan, please mute कीजिए. आपका voice break हो रहा है and that is causing disturbance. अभी तक OG आप लोग रिवाइज नहीं किए हो. पुअर हाउसकीपिंग बोल के मैं कुछ भी पॉइंट नहीं पढ़ाया हूँ. वर्क एनवायरनमेंट पढ़ाया हूँ. उसमें अनसेफ कंडीशन कुछ भी दिखता है तो दैट मींस द वर्क एनवायरनमेंट इज नॉट सेफ. ओजी फैक्टर जब मैं डिस्कस किया तब भी बताया था आपको कि सिनेरियो समझने के लिए ओजी फैक्टर जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना आसानी होगा. बट स्टिल यू गाइस आर नॉट डूइंग दिस. प्लीज डू रिवीजन प्रॉपर्ली. So here you have this swarf, this metal dust in the walkway. That shows what? That shows there is an unsafe work environment. Okay. You watch workers sweep the swarf from the machine into piles on the floor between machines. Negative, sir. Red. Between the machines, they are going to remove this swarf. So again, this is a negative point. Poor hazard perception. Yes, very good. Poor hazard perception, poor risk perception. आपका क्वेश्चन है इंडिविजुअल फैक्टर का, वहां पे यूज होगा ये. Yes, sir. This is what I want कि आप जब पढ़ते हो ना, when you are reading the scenario, you should be able to relate a point with your concept. Okay, so this point is telling that workers does not have good hazard or risk perception. They are going between the machine to clean this swarf. What will happen? They may stuck into the rotating part of the machine. Lead to accident. Yes. You also know that several piles have grown so large they have spilled into the walkways. Poor environment. Again, poor working Human environment. environment. Next, you see a worker with a loaded trolley leaving a designated walkway to avoid a pile of swarf that has spilled across it. Poor environment. Red color. Unsafe action, sir. एक वर्कर देखो क्या कर रहा है, लोडेड ट्रॉली लेकर जा रहा है और लोडेड ट्रॉली को क्या किया, डेजिग्नेटेड वॉकवे में छोड़ दिया. किस लिए? ये स्वार्फ को हटाने के लिए. सर इंडिविजुअल फैक्टर है, कंपोनेंट नहीं है. यस, इंडिविजुअल फैक्टर है. यस, इसका यूज आ गया अभी हम लोग को. अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. In the scenario, they provide sufficient point which you have to use when you are writing the answer. So many times when you did not recognize the point, then you write generic point. आप point लिखते हो but scenario से relate नहीं करते हो. That becomes generic point. Okay, which many of you did when you wrote about individual factor. Individual factor में scenario का point को relate नहीं किया आपने से बहुत सारे लोग. Okay, next. This action causes them to collide with a worker who is operating a piece of machinery that is attached to a bench. Red color. Red, sir. So one incident happened here. Next, the collision makes the operator fall forward, but they manage to narrowly avoid contact with the dangerous part of machinery. So Near miss. now this is a near miss. miss Yes. happened. You see, earlier I said incident. When I marked this point, I said incident. Now I am confirmed that injury So near miss. did not नहीं happen. हुआ. So I am telling Near you miss it's a- हुआ. Okay. So आप समझ रहे हो ना? We discussed during the class. Basic class में तो बात किया. Incident किसको बोलते हैं, accident किसे बोलते हैं, near miss किसे बोलते हैं. So unless and until you are not sure whether injury happened or did not happen, you call it incident. When you are sure that injury happened, then it will become accident. Accident. When you are sure that nothing happened, then it becomes near miss. But significant property damage can also be near miss. Now, an argument begins between two workers. Right, sir. The negative attitude of workers. So they know workers are having argument at the workplace. The machinery operators shout that they are already working overtime because the operator was injured from being knocked onto dangerous machinery. Yes, Yes, Workload. Workload. Work pressure. Workload. Yes. So workload ज़्यादा है यहाँ पे. Okay. You interrupt and ask why the swarf is piled up and are told that the vacuum extractor system broke last month. अभी ये swarf जो है, Lack of metal resources, को sir. निकालने के लिए, to remove this swarf, they have provided this. Safe equipment. Unsafe equipment. They have provided this equipment, right? Unsafe equipment. Now this खराब हो गया है. equipment is not working since last 1 month. मतलब मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम दिख रहा है आपको. आप देख रहे हो, they are not maintaining the equipment also. एक महीने से वो extractor, vacuum extractor काम नहीं कर रहा, and because of that, these swarf are accumulated at the workplace. Okay. Next, they also tell you that the workers did sweep the shavings into bags and took the bag to the waste disposal every 2 hours. इसको क्या कह सकते हैं? Positive, sir. Positive. Positive. नेगेटिव. हर 2 घंटे में वर्कर जितना भी स्वार्फ निकल रहा है ना, उसको जाकर बैग में लेकर डिस्पोजल में डाल रहे हैं. This पॉजिटिव. point we Good can environment. positive, right? So this is my point number 8. So this vacuum extractor is not working, but
the workers are doing housekeeping every 2 hours to remove this swarf, to remove this metallic dust. However, this practice stopped after the workshop manager disciplined workers for being away from their work areas. Now they only sweep the swarf to the site and remove it every 2 days. Negative, sir. Negative So ये commitment. workshop manager क्या किया? Now he Poor said that no need to remove this. You cannot be away from your working area. Poor commitment So from this organization. workshop manager is not allowing worker to clean this swarf. And because of that, earlier they were doing this housekeeping every 2 hours. Now they are doing this housekeeping in every 2 days. अभी हर 2 दिन में अगर आप करोगे, so definitely there will be issue related to housekeeping. So again, you can see here the issue related to workshop manager. So this is our point number 13. Next, the workers anxiously ask you not to record this near miss. They say that the WM criticizes anyone who has near misses for making problem that risk delays in work, delays cost money. Red or green? So this is our negative point. Okay. So you see here, this when you were recording this near miss, so the workers, they said that don't record near miss, don't do investigation of near miss, because this workshop manager, he criticized anybody who try to report near miss. He tells that the risk causes delay in the work and delay causes the loss of money. So here you can see again, you can find issue related to commitment of this workshop manager. He is discouraging people to record near miss. Near miss record करने में discourage कर रहा है लोगों को. That is also a problem, right? Next, they have already complained to the workshop manager. They told the workshop manager that accident would occur less often if the vacuum extractor system was fixed. These complaints were ignored. So ये vacuum extractor machine खराब हुआ ना. So these were reported to the workshop manager. The workers informed him that if you fix this issue of the vacuum extractor, then we can avoid these issues of the swarf, metal dust at the workplace. But their complaints were ignored. So he ignored, the workshop manager ignored their complaint. Complaint को भी ignore कर दिया. Next, you agree not to record the near miss if the swarf is cleaned up within an hour. You also promise that there will be no disciplinary action for doing this. The workers agree. Now here I will unmute you guys. You are a safety professional. Okay, you are a safety professional. You are agreed not to record near miss if the housekeeping are performed by worker. Motivation? No, sir. Motivation No, sir. Try to understand this point. Try to Green understand होगा this सर. point. Try to understand this point. Red होगा. मैं सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ. मैं Sir, एग्री करता हूँ कि मैं नियर मिस रिकॉर्ड नहीं Green करूंगा. point होगा सर. No sir. प्लीज कमेंट इन द Red चैट point. बॉक्स. जी और आर व्हाटएवर. Red होगा. Sir green होगा. Let me mute all of you. I'm asking you guys to comment in the chat box. Try to understand this point. I am a safety professional. I am telling that I will not record near miss if the area is cleaned up. Is it a red point or green point? Being a safety professional, how can you not record near miss? How can you do like this? आप कैसे कर सकते हो कि आप हाउसकीपिंग कर दो तो मैं नियर मिस को रिकॉर्ड नहीं करूंगा? टेल मी नियर मिस को रिकॉर्ड करना नहीं करना ये बड़ा प्रॉब्लम है या स्वार्फ बड़ा प्रॉब्लम है? Safety issues, which one is a bigger safety issue? Not recording near miss is a bigger issue, or not cleaning the swarf is a bigger issue? Near miss is a bigger issue because near miss one day it will convert into accident. So this guy who is a safety professional, he is also doing the wrong thing. He is not recording near miss. ये क्या एक तरह का ये रिश्वत दे रहा है. He is giving a bribe to worker that you clean the area, so I will not record near miss. So it should be red point. It is not a green point. It's not a positive motivation, ना. आप इसको motivation कैसे बोलोगे? It's a wrong type of motivation. How can you accept not recording near miss being a safety professional? So this is a red point. Okay, this is also a red point. Next, later that day you try to discuss the vacuum extractor system breakdown with the workshop manager, but you are criticized for contacting them. Now you try to consult with the workshop manager and you report him this issue of the vacuum extractor breakdown. Workshop manager, he criticized you. So you can see the issues of this management here again. So he is not ready to listen any complaint. You try to explain that it needs fixing immediately, but you are told there is no money for this, lack of resources. So he's not ready to spend money for safety. Again, negative point. The workshop manager involves you that the organization has stopped funding non-essential spending to pay for upcoming construction work.
and the WM then ends the conversation. So what again, this is a negative point. Workshop manager is telling you because they are going to start some construction work. So they have stopped, spending money on non-essential spending. You see, he feels that safety is a non-essential things. So this is also a negative point. So far, 19 negative points we are able to identify. Now we will get back to this upcoming construction work. Now in this production line area, what they're doing, they're starting some construction work. Okay, so here they will talk about some construction related work. Okay, so up to this point, we are able to identify 19 negative point and 7 or 8 positive points. Sorry, yeah, 8 positive points. Now, construction work on the administrative office is planned to begin in 2 weeks, and it will last for 3 months. So now you are going to start a construction work. I'm just making it black. I'll tell you why I marked it black. So now you are going to start a construction work. Okay. Now it's a manufacturing unit, and in this manufacturing unit, they are going to start some different kind of activity related to construction. Okay. Next, the work affect the areas near the entrance to the office. So because you are doing construction, so the area very close to the construction area will get affected. So the office will continue being used during the construction work. So they are going to use office, but some of the administrative workers who use mobility aids will be working from home during the construction work. Since you are doing the construction work, so what they plan that those who are required their physical presence in the office, they will come to the office even during the construction work. But those who use mobility aids, you मैं अक्टूबर के बैच पे हूँ सितंबर नहीं सॉरी अक्टूबर नहीं सितंबर अभी तक पेपर नहीं दिया मतलब सितंबर से दिसंबर भाई आप लोग दानिश खान से कांटेक्ट कीजिए। दानिश खान से टॉपर है भाई, दानिश खान। ओके ब्रो, करूंगा क्लास के बाद। मेरे चक्कर मत रहो यार सब। इसी की गर्लफ्रेंड भागी थी, इसीलिए वो बदला ले रहा है। अरे यार आईएएस बनो। हाँ तो इसी के लिए निकाल रहा है ना निबोश। ये तो बहुत आसान यार, आईएएस बनो तो कोई बात है। अरे इसी पे प्रॉब्लम नहीं है भाई, ड्यूटी कर रहे हैं यार, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर चले जा रहे हैं। ड्यूटी वाले के लिए और टफ हो सकता है, ड्यूटी वाले के लिए और टफ हो सकता है क्योंकि आप 8 घंटा क्लास के चलते जॉब नहीं कर रहा हूं, पता है। 8 घंटा का ड्यूटी है यार, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है भाई। यस, आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग शिफ्ट करा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा आप लोग को, क्योंकि आप is very high. So doctor has advised me to take this eye drop. So doctor actually advised me not to take your training also. But in between, if I stop your training, that is not good. So from next batch, I'm planning that I'll take a rest, long rest I will take. Okay. So but this batch anyhow I will finish because once I start, then I have to take this responsibility. Anyway, so you notice that it only state that restricted area will have warning sign. Induction training का पैक है आपके पास, कंटेंट है, वो कंटेंट में सिर्फ बोला कि आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया में वार्निंग साइन होना चाहिए। Is it a red or green point? रेड सर, रेड point है ना? Induction training में क्या क्या कंटेंट होता है? सिर्फ एक ही कंटेंट होता है क्या? ग्रीन What are the content of induction training? Again green you are telling. रेड Welfare facilities. Welfare facilities. What else? प्रोडक्ट्स मीटिंग, Yes. What is hazard? Detail about hazard induction. Detail about the risk. Investigation, how to investigate. डिटेल अबाउट इमरजेंसी प्रोसीजर, Welfare facilities, कैंटीन, टॉयलेट, असेंबली पॉइंट। PPE is just requirement. Emergency exit. This is the content of induction training which we had discussion in chapter 3. But here what they are telling in the induction training, they have only one content, that you should provide warning signage in the restricted area. That means what? It's a negative point. Induction training should not have only one discussion agenda, right? So this is our 20 number positive negative point. Next, the SM, again SM, here they are given the site manager, right? साइड मैनेजर, Site manager. Okay, so SM is site manager. Okay, so the SM is overseeing the construction work. This site manager looks after the construction work. You ask them if they would like the induction to list the restricted areas. The SM replies that nobody has any free time to update the pack, so it can remain in its current format. You ask the site manager to update the induction training pack, and site manager is telling you that they don't have free time to update the content of induction training. poor commitment. Yes. No. Induction pack is saved on the organization network as an electronic file. The health and safety policy is also saved in the same location. Since you have not thoroughly read the policy in 5 years, you decided to read it now. Now you see here, there are two Right. problems. One is
policy is 5 year old. ये रेट Not You updated did the it, policy. and you have not read the policy Right, sir. since last 5 years. So 5 साल से policy पढ़ा नहीं है आपने. That is also a problem, and the policy is 5 year old policy. So that is also a problem. Okay, it's a 5 year old policy, and you have not read policy in last 5 years. You notice that the health and safety policy still has the previous site manager signature who retired 6 years ago. रेट सर Negative. 6 साल पहले जो साइट मैनेजर रिजाइन करके चला गया उसका ही सिग्नेचर अभी तक है पॉलिसी में. आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन दिया ऑलरेडी, पॉलिसी रिव्यू करने का क्या कंडीशन है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट भी दे दिया बहुत सारा. नेक्स्ट, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट वन एक्सीडेंट. 3 days into the construction work, a new worker sees a construction contractor using their mobile phone to video the new robotic arms. Now, Unsafe action. yes, a new worker sees a construction contractor is using mobile phone in the production floor and recording the robotic arms. Recording. So this is a negative point. The worker shouts out a warning, but there is no reaction. Worker ने उसको बताया कि यहाँ पे मोबाइल रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है. But he did not. Negative Did not attitudes. respond. Yes, but he did not respond. The workers run over to the construction contractor, but slip on the floor into the path of a robotic arm that hits the worker. यहाँ पे again दो प्रॉब्लम है. एक तो है ये वर्कर दौड़ा है, Unsafe work environment. Unsafe behavior. and दूसरा Unsafe work environment. दूसरा है वो स्लिप हो गया. Environment. Okay, दूसरा है वो स्लिप हो गया. Okay, so this one, is it right to run at the workplace? No, sir. No, sir. Unsafe action, sir. do not Unsafe behavior. So this worker runs at the workplace, and because of that he sleep on the floor and fall into the path of a robotic arm that hit the worker. The worker is knocked onto the floor. Sorry. The worker is knocked onto the floor, and the construction contractor steps back in panic. The production line supervisor happens to be returning from their lunch break and witness the worker being hit by the robotic arm. The supervisor quickly locates and presses the robotic arm emergency stop button before calling for a first aider. This point, red or green, green Green, sir. Green. Green, sir. shows good emergency response, right? So this Yes, sir. point is a green वो point. इमरजेंसी भी प्रेस किया और फर्स्ट एडर को भी बाद में कॉल भी किया. कोई बता रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट भी बोल सकते हैं. Yes, good. So here you have, this is your point number 20. Next, 5 minutes later, you are informed of the accident and quickly walk towards the factory. Now, so read this No, sir. bottom part. Outline the possible financial impact. 15 marks given. So they're asking you to write down about financial impact. If you're not clear, you can go and read. They're talking about this accident happened because of this robotic arm. So what is the financial impact of this? Which topic is related to this question? financial cost Financial loss. direct indirect Direct, Yes. indirect. Financial loss होगा उसको. So आप कहाँ जाओगे? Direct indirect cost. डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट. आप देखो 15 मार्क्स दे रहा है, समझ रहे हो? 15 Yes. मार्क्स मतलब अभी 5 नंबर एग्जाम में भी फाइनेंशियल रीजन से क्वेश्चन 16 मार्क्स का दिया. मैं बोला है 5 नंबर एग्जाम में जो बंदा फेल होगा ना, मैं उसके नाम पे एफआईआर करने वाला हूँ. इतना इजी क्वेश्चन ना मैं लाइफ में नहीं देखा. मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था ना कि मैं भी रजिस्टर करके एग्जाम दे दूं नेबोश का. You know why? My Nebosh exam was terrible. I wrote my Nebosh exam in the year 2012. Okay, that time I was working with L&T, and L&T, you know, they actually finance their safety professional to go for Nebosh. So they send me to Lonavala. So in Lonavala, L&T has their leadership development academy. Okay, so क्या किया, मुझे भेज दिया लोनावला में, बोला जाकर नेबोश का कोर्स करने के लिए, ठीक है ना, और वो पेमेंट भी नेबोश ने, L&T ने किया. So me and my boss, both of us went for this Nebosh. Okay, I'll tell you now, my training was such a pathetic training. And I will tell you, my trainer, he was actually the safety head, the vice president safety of L&T, Mr. Kamarajan, building and factories unit का ना safety head है, white hair है पूरे, 30 years experience का बंदा है. The training was so torture ना कि मैं आपको बता नहीं सकता in word. Means our entire training, and first day of the training he said that those who are coming from L&T for Nebosh, almost 70-80% people they failed in the exam. And that time I was handling one project in L&T. So I thought कि अगर मैं safety का बंदा होके safety के कोर्स में फेल होके जाऊंगा ना, so लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. So I was little bit serious about that, but सच में मैं आपको बताऊं ना, it was so terrible training. पूरा ट्रेनिंग खत्म हो गया ना, we were not aware कि क्वेश्चन नेबोश का कैसा होता है, लिखना कैसा होता है. Then I realized कि क्यों इतने फेल होते बंदे. आपको पता है मेरा नेबोश का जो एग्जाम हुआ, लकीली मैं पास किया, बट आप में से कोई भी ना मेरे से गंदा मार्क्स नहीं लाएंगे नेबोश में, दैट आई एम 100% श्योर. सो मेरा पहला पेपर में 45 में पासिंग मार्क्स था, तो मुझे 46 आए. दूसरा पेपर में 45 में पासिंग मार्क्स था, तो मुझे 45 भी आए. और उस टाइम एक प्रोजेक्ट का अलग से पेपर होता था, उसमें 60 में पासिंग मार्क्स था, मुझे 61 या 62 आए.
तो मेरा कोई भी कैंडिडेट ना मुझसे गंदा पास नहीं करता नेबोश। तो मुझे कभी पेपर में देखता हूँ ना, आई रियली फील लाइक यार मेरे को भी नेबोश पे लिखना चाहिए। बट एनीवे आई वांट टू सी गुड मार्क्स फ्रॉम यू गाइस, यू नो, सो नन ऑफ यू विल ब्रिंग अ मार्क्स लोअर देन मी, ओके। सो दिस इज अबाउट फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कि क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा अगर ये रोबोटिक आर्म के एक्सीडेंट से। आप क्या करोगे? आई सेड गो बैक टू क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में जाएंगे, सो क्वेश्चन नंबर 1 एक एक पॉइंट लेंगे और लेकर लिख देंगे। Now, even in this question from previous batch, few of you committed mistake and not scored 15 out of 15. ऐसा क्वेश्चन में अगर आप फुल मार्क्स नहीं उठाएंगे तो फिर क्या बोलूं मैं? इसमें हमारा सर फुल आया था इसमें। पार्टी दे सकते हैं आप मुझे, आई वोंट माइंड। इसमें फुल मतलब आप पूरा ओवरऑल आप लोग जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, एटलीस्ट आपका 65 अबव मार्क्स आना चाहिए सब लोगों का, ऑल ऑफ यू, ओके। सम ऑफ यू आर स्कोरिंग इवन मोर देन 75, दैट्स गुड। सो दीस आर द फाइनल इंपैक्ट। क्या करेंगे? वन बाय वन वी कैन टेक। और आपको क्लास में मैं देखो कितना बताया हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ 2 2 4 2 6 2 8, इनडायरेक्ट कॉस्ट में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 18 पॉइंट तो मैं खुद बता के रखा हूँ आप लोग। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 18 पॉइंट आराम से लिख के आओगे। क्या है, रोबोटिक आर्म का एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जो आप लोग मिस्टेक करो ना, जब आप ऑलवेज ट्राई टू यूज द प्रीमाइसेस ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा ये रोबोटिक आर्म के एक्सीडेंट से, सो वो बताओ, ओके। सो बोल दो द एक्सीडेंट ड्यू टू हिट बाय द रोबोटिक आर्म leads to injury which may cause frustrated and prostrated. Right? Similarly, go back to each point, एक point लो, सब में वही बताओ। Hospitalization cost, the accident related to robotic arm lead to hospitalization of the worker which may cause hospitalization cost. Sick pay में जाएंगे, compensation में जाएंगे, legal fine, फिर indirect cost में आएंगे, loss of reputation, it's a manufacturing unit. The robotic arm accident may cause loss of reputation in the market about our manufacturing organization. Like that, you have to write down minimum 15 points to gain 15 marks. Question number 1, is it clear to everyone? Anybody has any doubt, any question, बोल दीजिए। क्लियर सर। नो सर, क्लियर सर। Anybody सर एक has क्वेश्चन doubt? है हाँ बोलिए। सर। जैसे सारे लोग एक तरह का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो फिर जैसे सारे लोग ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए? पॉइंट आप क्या जैसे लिख रहे हो? एक साथ सीधी What you सेम write रहेगा is- तो मिडिल अभी आप देखो 129 में नेबोश एग्जाम होता है। ये सारे कंट्रीज में जितने लोग भी एग्जाम देंगे, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होता है? ये डायरेक्ट कॉस्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना। सो एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट दिस कॉस्ट ओनली। बट आपका अपना वे ऑफ राइटिंग होगा, मेरा अपना वे ऑफ राइटिंग होगा। तो इवन व्हेन यू राइट द मॉक टेस्ट, आपका कभी भी किसी का फुल मैच नहीं करता है। आपको मैं 10 बंदे का भेज दूंगा ना, 10 में से 10 का मैच नहीं करेगा, आपको 1000 का मैच नहीं करेगा। हर एक का अपना अपना वे ऑफ राइटिंग होता है, अपना ग्रामर होता है ना। सो डिफरेंट कंटेंट। इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका किसी और के साथ मैच कर जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? एडिंग तो मैच कर जाएंगे ना सर? नो सर, हेडिंग तो पूरा दुनिया का मैच करेगा सर। आप बताइए ना, फाइनेंशियल इम्पैक्ट कुछ और है। आप चलो, अगर आप अपना काम को डिफिकल्ट करना चाहते हो ना, चलो आप लिखना ऐसा कि इसका हेडिंग को भी चेंज कर जाओ, ठीक है सतीश? आपके लिए सिर्फ ये नहीं नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हेडिंग अगर सेम रहेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ। मैं एग्जामिनेशन टेक्निक के टाइम में बताया था आप लोगों को कि आप हेडिंग यूज कर सकते हैं, हेडिंग नहीं यूज बताया कर था? सकते हैं, देन लिखना है वो ऑन वर्ड। उसके अंदर का कंटेंट बोला था आपका लिखना है। इवन You डायरेक्ट can use क्वेश्चन that bullet point होता है ना। यू कैन सर जो 7 जनवरी पे एग्जाम देगा वो भी ये मैं मॉक टेस्ट करना है। जब आप कंटेंट लिखते हो ना, वो कंटेंट आपका अपना वर्ड, अपना वे ऑफ राइटिंग, अपना ग्रामर होना चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। गूगल से ले सकते हैं ना सर, उसमें कुछ चेंज कर क्वेश्चन सकते था हैं। गूगल, चैट नहीं, गूगल जीपीटी में मत जाइए। पहला चीज मैं आप लोगों को बताया ऑलरेडी कि मैं एक नेबोश का पेपर को पूरा चैट जीपीटी में डाल के आंसर निकाल के उसका मार्किंग किया, बिकॉज मैं नेबोश एग्जामिनर हूँ, हमें मार्किंग स्किप मिलते हैं, ओके। उसमें चैट जीपीटी आपका नेबोश एग्जाम में फेल हो गया, ओके। बिकॉज अगेन मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा हो ना, वो आप जाकर चैट जीपीटी में उसका आंसर निकालिए और आपका क्लास नोट से मैच कीजिए, आपको दिखेगा। बिकॉज यहाँ पे जो मैं क्लास नोट्स में क्यों जाने बोलता हूँ, आपको क्यों रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ, मैं जो पॉइंट आपको समझाता हूँ लिखाता हूँ ना, वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो नेबोश में उसके कारण से मार्क्स मिलते हैं आपको। इसके लिए आप देखो, आपके दोस्त और को ने कुछ इंडिविजुअल फैक्टर में 10 पॉइंट लिखा, बट मैं उसको 2 या 3 मार्क्स दिया। क्यों दिया? बिकॉज क्लास नोट्स को यूज नहीं किया बंदा, एग्जाम्पल यूज नहीं किया। सेम थिंग अप्लाइज टू अदर पर्सन ऑल्सो। सो बिकॉज मैं क्यों आपको बोलता हूँ रिवाइज करो, और जो मैं 5 स्टेप बताया उसको फॉलो करो। वो फॉलो करोगे आप तो मार्क्स आपको मिलेगा। यू सी इन सच अ डिफिकल्ट पेपर पीपल आर स्कोरिंग 72 मार्क्स, 69 मार्क्स स्कोर किए। सितंबर का जो पेपर था अभी तक का इस साल का सबसे टिपिकल पेपर था। टिपिकल मतलब ये मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, नॉन क्वेश्चन कम आए। जैसे आप बाकी जितने एग्जाम होते हैं ना, आप देखिए जो पिछला एग्जाम हुआ, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन नॉन क्वेश्चन थे, उनको नॉन क्वेश्चन कम आए, बट स्टिल दे मैनेज टू स्कोर सच अ गुड मार्क्स। बिकॉज आप ये जो मेरा टेक्निक है इस पे पकड़ के रखो, ये पकड़ के रखेंगे, नेबोश आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा।
ओके, बट आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव अगर जाना चाहते हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा अगेन, फिर हमारे इंस्टीट्यूट से नेबोश क्यों करना? उससे बेटर है अगर आप चैट जीपीटी या गूगल देख के अगर नेबोश एग्जाम क्लियर करना चाहते हो ना, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ कम से कम आपको फीस कम रहता है, कम से कम वो पैसा बचेगा। यहाँ पे आके भी अगर आप मेरा टेक्निक सीखेंगे नहीं ना, तो फायदा क्या, बताओ ना? उससे बेटर क्या है? उससे बेटर जाइए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपको कम पैसे में होता है नेबोश, ताकि कम से कम पैसे तो बचा लेंगे, बिकॉज आप तो मेरा फायदा उठा नहीं रहे हो ना। अगर आप मेरा फायदा नहीं उठाएंगे तो फायदा क्या आपको? अगर आप चैट जीपीटी से या गूगल से ही करना है, क्या फायदा होगा, बताओ ना? वो मत करो। ओके, वो फायदा नहीं आपको। ओके, आपको जो टेक्निक में बताया ना, उस पर चलिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, रीड क्वेश्चन नंबर 2 एंड टेल मी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट द क्वेश्चन? पॉलिसी रिव्यू करने के लिए सर क्या क्या पॉलिसी रिव्यू करने के लिए क्या रीजन होना चाहिए बोला? अगेन इन दिस क्वेश्चन, रोबोटिक आपको पॉलिसी क्यों रिव्यू करना है इसका कंडीशन पूछा, एंड दे हैव गिवन द 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आपको दिया। ओके, नाउ टेल मी, डू वी हैव 12 पॉइंट इन दिस सिनेरियो रिलेटेड टू कंडीशन टू रिव्यू पॉलिसी? 12 पॉइंट है क्या? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो 12 पॉइंट, लिखा हाँ वेरी गुड, एक बार सी, दिस वाज द 12 इशू पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स आर नॉट गिवन एक्चुअली। 12 पॉइंट तो नहीं दिया आपको सिनेरियो में, ठीक है ना? बट आप देखो ना, इट्स अ सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन। व्हाट आई सेड कि सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन जब रहता है, तो जितना पॉइंट सिनेरियो में दिया है दैट यू राइट डाउन, apart from that you use your class note, but when you are presenting the answer it should appear like you are talking about this scenario. For example, मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो आ जाओ सिनेरियो में पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना पॉइंट दिया पॉलिसी रिव्यू करने के लिए। ओके, एंड नो नीड टू यूज मेमोरी, सो विल कम हियर। यू सी हियर अ न्यू equipment are introduced. Again, when you guys are writing answer, first you go to class note. Policy review समझ में आ गया ना? Go back to your class note जहाँ पे policy review बताया मैंने। ये आप लोग बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, कीजिए ये। ओके, आप सिस्टम से बाहर मत निकलिए, अदरवाइज आप मिस करेंगे पॉइंट। सो आई हैव डिस्कस कंडीशन टू रिव्यू पॉलिसी। ओके, इसमें क्या क्या बात क्या, एक बार पढ़ लिया करो। इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, 24 घंटा का टाइम मिलता है, बहुत टाइम है। सो सीओ चेंज होता है तो पॉलिसी रिव्यू करना है, लॉ ऑफ द कंट्री चेंज होने का पॉलिसी रिव्यू करना है, ऑब्जेक्टिव टारगेट चेंज होता है तो करना है, टाइम पास होने के बाद करना है, मेजर एक्शन के बाद करना है, इक्विपमेंट चेंज होता है तो भी करना है, कुछ नोटिस मिला तो करना है, पॉलिसी में लूपहोल मिला तो करना है, क्लाइंट रिकमेंड कर सकता है, लीगल रिक्वायरमेंट रिव्यू करना है, एक्शन रेट बढ़ता है तो करना है, इफेक्टिव नहीं है तो करना है, कुछ अपडेट आता है आईएसओ में तो करना है, प्रोसेस चेंज होता है तो करना है, और इनइफेक्टिव पॉलिसी तो करना है। ये इतना पॉइंट बताया। बट इफ यू लुक एट द सिनेरियो, इन द सिनेरियो दे हैव गिवन पॉइंट अबाउट दिस, यस और नो? इसे बताया पहले मुझे बात करने दो। इन बिटवीन डोंट आस्क मी क्वेश्चन, लेट मी फिनिश फर्स्ट एंड देन यू आस्क क्वेश्चन। ओके, बीच में क्वेश्चन मत पूछिए मुझसे, पहले मुझे ये चीज समझाने दीजिए, लिखने दीजिए, फिर आप पूछिए क्वेश्चन। ओके, सो पेशेंटली प्लीज लिसन टू मी। सो यहाँ पे आप देखो, इन दिस वी हैव डिस्कस मेनी पॉइंट, बट ऑल द पॉइंट्स आर नॉट मेंशन्ड इन द सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, सिनेरियो में बात क्या है, क्या अबाउट लॉ ऑफ द कंट्री चेंज हुआ है? यस और नो? नो सर नो सर, नो सर। टॉक अबाउट एनी चेंजेस इन द लॉ ऑफ द कंट्री, दे डिड नॉट टॉक अबाउट, राइट? सिनेरियो में बात क्या है, क्या कि आपको वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट मीट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बात किया क्या? नहीं सर नहीं सर, नहीं सर। सिनेरियो में कुछ बात किया है, कुछ बात क्या किया, बताया कि एसएम चेंज हुआ है, वो बात किया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, इक्विपमेंट चेंज हुआ, ये भी बात किया आपको, रोबोटिक काम लगाया, ठीक है ना? देन प्रोसेस भी चेंज हुआ, वो भी बात किया आपको। ये जो हम लोग प्रोसेस का बात करें ना, यहाँ पे मैनुअल पेंटिंग की जगह पे भी क्या हो रहा है, रोबोटिक काम से पेंटिंग हो रहा है, तो उससे 2 पॉइंट दे सकते हैं। फिर एक्सीडेंट भी हुआ है सिनेरियो में, रोबोटिक काम से हिट हुआ, तो पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए, यस और नो? देन आपका पॉलिसी 5 साल पुराना है, पैसेज ऑफ टाइम का भी है, यस और नो? इन द सिनेरियो मेंशन सर, दैट यस सर, यस पॉलिसी इज 5 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 पॉइंट तो ऑलमोस्ट दिख रहा है जो सिनेरियो में है, बट आई हैव टू राइट डाउन 12 पॉइंट, राइट? हमको तो 12 लिखना है। 12 लिखने के लिए क्या करेंगे, जितना पॉइंट सिनेरियो में दिया वो लिखेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाटएवर वी लर्न इनटू दिस टॉपिक, उसको हम सिनेरियो जैसा करके प्रेजेंट करेंगे। तो मैं दोनों टाइप का करके दिखाता हूँ। ओके, सो पहले आ जाओ, फर्स्ट विल कम टू दिस। सो देयर इज अ न्यू रोबोटिक आर्म इंस्टॉल्ड, सो ये पॉइंट, न्यू इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ना, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2, ये वीकेंड में जो लोग ये सिनेरियो नहीं किए, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए इसका, सैटरडे संडे यूज करो। So these are the reason to review health and safety policy. So I'm taking this point. So this point talks about our change in equipment. If you look at this, this point is about introduction of new equipment or introduction of new technology, whatever. This point, right? So the paintings, the robotic arm is installed, the painting sections require the policy to be, so because that was written, or if you want in other way to present, आप ऐसा बोल सकते हो, the policy should be reviewed after introduction of new equipment such as robotic arm in the painting unit. So ये आप जो सिनेरियो में दिया उसको देखकर बात कर रहे हो, like here in the scenario they have mentioned that this is a 5-year-old or 6-year-old policy. Yeah, the policy is 5-year-old.
मतलब क्या पैसेज ऑफ टाइम से रिलेटेड है ये? Yes, sir. Yes, sir. The question is asking you what is the reason to review policy? Policy क्यों review करना है? So the policy of the manufacturing organization needs to be reviewed because it is 5-year-old policy. ये तो जो सिनेरियो में दिया वो मैं लिखा हूँ. Now I'm showing you whatever point you are using from class, how you can present that point. For example, that in the scenario they are not. Sir, pick up the insurance agency example. हाँ मैं ले लेता हूँ. 1 second. Okay. So अभी आप देखो, when any point not given in the scenario, so how you can present, because it is a second category question. So 12 point तो नहीं दिया. जब 12 point नहीं दिया, but I have to write on 12 point now. So let's suppose your friend is asking that insurance agency recommend करे तो क्या करेंगे? लिख दो. The policy of manufacturing organization. आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं जो बात कर रहा हूँ ये जनरल बात नहीं है. बता दिया मैं. So यहाँ पे आप देखो, is it a general point or scenario point? No, I'm sir. telling, General point. General General point. General point. I'm talking about this manufacturing organization. So I'm presenting it. अगर आप क्लास नोट में देखोगे तो it was a general point कि इंश्योरेंस कंपनी करेगा तो. पर यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पॉलिसी रिव्यू करेंगे इंश्योरेंस एजेंसी के रिकमेंडेशन पे. सो आई एम प्रेजेंटिंग दिस पॉइंट लाइक इट अपीयर्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिनेरियो. मैं सिनेरियो ऐसा बात करूँ सो द लीगल रिक्वायरमेंट का सपोज चेंज इन द लॉ ऑफ द कंट्री, इसको आप प्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि पॉलिसी रिव्यू करेंगे लॉ ऑफ द कंट्री चेंज होने के बाद. सो चेंज इन द लॉ, तो बोल दो द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग organization should be reviewed after the change in health and safety law of the country. Like that 10 to 12 point, 6 पॉइंट जो सिनेरियो में दिया है ऑलरेडी. प्रोसेस चेंज हुआ, मैनुअल से पेंटिंग में आ रहा, रोबोटिक काम, वो बात करना है. यहाँ पे एक्सीडेंट, आफ्टर एक्सीडेंट हैपेंड, यहाँ पे क्या एक्सीडेंट हुआ वो बताएंगे. तो यहाँ पे एक्सीडेंट क्या हुआ, एक वर्कर रोबोटिक काम से हिट होकर गिर गया तो बोल दो द पॉलिसी must be reviewed due to an accident of the worker because of hit by robotic arm. So ये तो सिनेरियो ऑलरेडी दिया है, तो ये मैं सिनेरियो से बात कर, बट जो नहीं दिया ये दोनों सिनेरियो में नहीं दिया, बट आई एम प्रेजेंटिंग कि मैं इसी सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूँ. ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी अपडेट करना है आफ्टर चेंज इन द लॉ ऑफ द कंट्री, आफ्टर रिकमेंडेशन बाय एनफोर्समेंट इंश्योरेंस एजेंसी. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. 12 पॉइंट इजीली यू कैन राइट डाउन. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2. यस, somebody was asking question, now ask me. Yes, somebody was asking question in between. So that is why I asked you to listen to me, because I know when I will brief you, you will not have question. Now I'm coming to question number 3. Question number 3. Which category of question is this? Question number 3. Based on scenario. Based on Based scenario. on scenario only. What they are dealing, comment on Only the based on- positive approach to managing home working risk by the car manufacturing organization. 9 marks given, 9 point I have to write down. So they are asking you, write down, comment how they are managing the work from home risk. Do you have 9 point in the scenario? Yes, almost, sir. Not almost. You have exactly 9 point you have. So you have mobility aid. You are locating the policy of this. Point number 2. You send questionnaire related to work from home. Point number 3. You recirculate policy. Point number 4 or 5. Yeah. This one. 5, sir. 1, Sir, 2, 3, sir, 4 हुआ, sir. 4. 4. Then this DSC risk assessment क्या 5. Review क्या work from home risk assessment 6. Then team leader is having regular meeting 7. Twice weekly meeting for discussing non-work update also 8. Reminder given to the team member 9. This one 10. This one 11. 11 point given. लिखने के लिए क्या है? I told you the way of writing answer when you are taking point from scenario. For example, what is the central point of this point? Heading कैसे बनाते हैं हम लोग जब सिनेरियो से लेते हैं तो by set center point लेंगे. The center So, point. Time and long time. short term and long term working from home Policy, policy. sir. Policy. Right? Policy. So question number 3. These are the comment on managing work from home risk. The organization has short term and long term policy for work from home. So whatever is written, that I have just written in my own words. Simple. It's a 9 marks question. 9 point I have to write down.
सो हर एक पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट को हेडिंग बनाएंगे, 9 पॉइंट लिख देंगे, ऑलरेडी दिया 9 पॉइंट इजीली यू कैन फाइंड आउट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. एक और लिख क्लियर सर, क्लियर। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। बोलिए। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहा है तो उसमें रिस्क क्या रहेगा सर? उसमें तो कोई रिस्क नहीं रहेगा? बताइए आप घर में काम कर रहे, 8 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे, क्या रिस्क रहना चाहिए? आपको मैं अपना एग्जांपल दूं क्या नॉट? आप जब घर में बैठ के काम करते हो ना, विजन इशू, तो सबसे पहले तो आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बराबर नहीं रहते। ओके, घर में जब आप काम करते हो तो यू कैन नॉट मेंटेन द पोस्चर ऑफ योर बॉडी। तो क्या होगा, आपको बैक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल पेन, ये जो स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं आपको, है ना, आई ड्रॉप सर। ये आपको वर्क फ्रॉम होम के कारण होते हैं। देन आप जब डिस्प्ले स्क्रीन के सामने बैठ के काम कर रहे हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो आंखों में स्ट्रेन होता है, हेडेक होता है आपको उसके कारण से। स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है जब आप लगातार किसी स्क्रीन के सामने बैठ के काम करते हैं। योर स्ट्रेस लेवल विल इंक्रीज। ओके, वो बढ़ता है आपका, बिकॉज आपका ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं रहता इसमें, यू डोंट हैव ह्यूमन इंटरेक्शन। वर्क फ्रॉम होम में क्या हो जाते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन विल बी स्टॉप। वर्क प्लेस में जब आप काम करते हो तो आप कलीग से बात कर रहे हो, यू हैव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू हैव एक्सचेंज ऑफ इमोशन। बट जब घर में आप बैठ के काम कर रहे हो ना, तो यू डोंट हैव कलीग्स हु वर्क विथ यू, यू आर अलोन। तो क्या होगा, आपको सारे टाइम सिर्फ काम कर रहे, तो आपको कुछ गॉसिप करने के लिए कोई नहीं है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो दीज आर द रिस्क यू हैव। इसके लिए ये कंपनी क्या किया, वर्क फ्रॉम होम का पॉलिसी बनाया, वो पॉलिसी भेजा, फिर जो डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट है, ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसका रिस्क असेसमेंट किया, इसका रिस्क असेसमेंट को रिव्यू भी किया, फिर 1 to 1 कनेक्ट करता है सबसे बात करने के लिए, और उसमें वेल बीइंग डिस्कस होता है कि आप ठीक हो ना। उसमें नॉन वर्क रिलेटेड बात भी होता है। ये नॉन वर्क रिलेटेड बात क्यों कर रहे हैं ये लोग, आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। आपको पूछेंगे चलो बताओ क्या मूवी देखना है आज इस वीकेंड को, घर में क्या चल रहा है। सो वो नॉन वर्क रिलेटेड, यू सी दे हैव मेंशन ऑलरेडी, दे हैव द डिस्कशन व्हिच आर नॉन वर्क रिलेटेड। ये क्यों डिस्कस करते हैं आप नॉन वर्क रिलेटेड? अभी जैसे मैं टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ सिर्फ, इट मे बिकम, यू मे बिकम एग्जॉस्टेड बिकॉज आपका 2.5 आवर्स रहते हैं ना, इसके लिए आप एग्जॉस्टेड नहीं होते। बट अगर मैं 8 घंटा बैठ के सिर्फ टॉपिक पे पढ़ाऊंगा ना, आप में से 90% लोग भागेंगे। So I have to discuss something. I'll tell you, हम लोग जब before COVID when we used to have this face to face training, तो ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग होते थे। यहाँ पे कोलकाता में लिंड से होटल है न्यू मार्केट में, वहाँ पे ट्रेनिंग होते थे। सो वहाँ पे क्या हम लोग का पूरे फुल डे ट्रेनिंग होते थे, 8 घंटे का नेबोश का। ओके, सो फुल डे ट्रेनिंग में क्या, लंच के बाद में 1-1.5 घंटे तो हम लोग सब कैरियर रिलेटेड बात करते थे। ऐसे ही कभी विराट कोहली पे बात हो गया, तो कभी किसी चीज़ पे बात हो गया, कभी कुछ अलग अलग डोमेन क्या है सेफ्टी का, उस पर बात हो गया। बिकॉज पता है मुझे, लंच करके बंदे को बैठा के पढ़ाना मतलब सब सो जाएंगे। सो वर्क फ्रॉम होम में आपको ये सारा इशू फेस करना पड़ता है व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो आपको नॉन वर्क रिलेटेड टॉपिक डिस्कस होता है सो दैट आपका स्ट्रेस रिलीज हो। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू, या समबडी वाज आस्किंग कि और कोई पॉइंट लिख के दिखा दो, कोई भी पॉइंट लिख दो ना। रीसर्कुलेट पॉलिसी लिख दो, ये पॉइंट को जस्ट हेडिंग दो, रीसर्कुलेट पॉलिसी, इसका लिख दो, आई हैव रीसर्कुलेटेड द पॉलिसी ऑफ वर्क फ्रॉम होम टू ऑल द अफेक्टेड वर्कर्स। ये वाला पॉइंट, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट? रिस्क असेसमेंट, वर्क स्टेशन डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, रिस्क असेसमेंट फॉर डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट। बोल दो, the organization has conducted risk assessment for DSP. That's it. सर अगर वर्क स्टेशन रिस्क असेसमेंट लिखे तो कैसा रहेगा सर? हाँ जी, वर्क स्टेशन रिस्क असेसमेंट लिखे अगर उसका हेडिंग तो कैसा रहेगा? लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, चलेगा। ओके सर, लिख सकते हैं सर वर्ड काउंट मैनेज करना पड़ता है। हाँ जी, वर्ड काउंट नहीं उसके लिए मैं टेक्निकल गाइडलाइन का एक क्लास रहेगा, उसमें बात करेंगे, ठीक है ना। अभी कंटेंट पे बात सर करेंगे। मेरा पिछली बार 4266 वार्ड हो गया था सर। होने दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले एग्जाम दिए हो कभी? नहीं सर, नहीं दिया था सर। पिछले जगह रोबोटिक आर्म वाला मॉक टेस्ट में मेरा सर चला गया था सर, 4266। रोबोटिक काम में कोई इशू नहीं है। आप देखो, मैं टेक्निकल गाइडलाइन का क्लास दूंगा आपको एग्जाम से पहले, उसमें मैं बात करता हूं इसके ऊपर। ओके, नो इशू। वर्ड काउंट नेबोश में मैटर नहीं करता है, नाइदर इन IG1 नॉर इन IG2। बट 4200 इतना लिख दियो आप, कितना मार्क्स मिला आपको? 77 सर। अरे तब तो फिर क्या कम करना चाहते हो मार्क्स अपना? नहीं सर, मैं सोचता हूँ कि इतना ज्यादा वार्ड हो गया तो फिर एक्चुअली एग्जाम के दिन इतना ज्यादा नहीं हो, इतना ज्यादा लिखने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। ओके, एग्जाम के दिन मिलेगा। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे नेबोश एग्जाम में वर्ड काउंट मैटर नहीं करता है। आई हैव सीन पीपल जो 2400 वर्ड लाके भी डिस्टिंक्शन से पास हुए। आई हैव सीन पीपल जो आपके जैसे 4000 वर्ड लाके भी डिस्टिंक्शन से पास हुए। सो वर्ड काउंट मैटर नहीं करता है, आप कंटेंट बराबर फाइंड आउट करके लिख रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो मैटर करता है। ओके, सो नेबोश में वर्ड काउंट का कोई टेंशन मत लीजिए, नो नीड टू टेक एनी टेंशन। इसका सैंपल आंसर मिलेगा ना सर, ये रोबोटिक आर्म वाला हाँ, सिनेरियो? भेजूंगा। अभी आपके सारे बैचमेट किए नहीं ना अभी तक मॉक टेस्ट। अभी क्या सब लोग मॉक टेस्ट नहीं करते ना, तो मैं आंसर नहीं भेजता हूँ कि वो लोग आंसर लिखने पहले आंसर मॉक टेस्ट करने पहले आंसर देख लेंगे ना, सो फिर फायदा नहीं है वो। ओके, इसके लिए मैं सर ये वाला वार्ड फाइल में थोड़ा चाहिए सर, वो जो सिनेरियो वाला वार्ड फाइल सर। हाँ, ये तो मैं भेज दूंगा, नो इशू। ओके, लेट मी कम टू नाउ क्वेश्चन नंबर 4A where many of you committed mistake because you have misinterpreted the question. Yes, current batch, read question number 4A and can you tell me what this question is asking you to write down? Only the current batch. Read this question 4A. Only current batch. Where applicable. सर सिनेरियो से कुछ लेना है और कुछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा बताओ मुझे। जस्ट मेक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या-क्या एविडेंस लेना है?
Accident investigation. Read the question, guys. Please read the question. What action should be taken to collect? What action should be taken? सर सर कौन सी स्टेप में क्या एक्सीडेंट कौन का कौन सा इन्वेस्टिगेट एविडेंस करना है और क्या कलेक्ट करना है? should be taken to collect evidence? You start, Evidence you collect करने के लिए teach क्या us, करना होगा हमें? क्या कलेक्ट करने वीडियो इन्वेस्टिगेशन में क्या एक्शन लेना होगा? एक्सीडेंट एविडेंस है सर। Evidence collect क्वेश्चन क्या पूछा देखो, व्हाट एक्शंस, सो दे आर आस्किंग अबाउट योर एक्शन, आप क्या एक्शन लोगे? इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू व्हेन आई डिस्कस द एफएलडी सिनेरियो इन द क्लास दैट ऑलवेज लुक एट द इमीडिएट वर्ड आफ्टर डब्ल्यूज, व्हाट, व्हाई, इसके बाद का वर्ड देखो। सो क्या बोला, व्हाट एक्शंस, आप क्या एक्शन लोगे? ओके, सो आपको बोल रहा है क्या एक्शन लोगे, क्या चीज के लिए? टू कलेक्ट एविडेंस, आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। ओके, यू वांट टू कलेक्ट एविडेंस, उसके लिए एक्शन क्या लोगे? क्या चीज का एविडेंस? ये प्रोडक्शन लाइन का एक्सीडेंट जो हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए बोला आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या एक्शन लोगे बोला। एंड 14 मार्क्स गिवन। अगेन व्हाई आई कीप ऑन आस्किंग यू गाइस टू डू रिवीजन, because when you do revision, writing answer become very easy for you. So accident investigation steps, some of you have written all the steps of accident investigation, which is totally incorrect. They are not asking you to write on steps of accident investigation, they are asking you how you will collect evidence about this accident. Now current batch, can you tell me what you will do? One accident happened at your workplace, पहले बैरिकेड करेंगे, पहले बैरिकेड इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद सर Inspection evidence नहीं खोने के लिए सर इंटरव्यू चेक करेगा और क्या करेगा? इंटरव्यू विटनेस इंटरव्यू करेंगे विटनेस को, और बताओ रिएक्टिव रिकॉर्ड देखेंगे। सो यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन के लिए 1 मार्क्स, इंस्पेक्शन के लिए 1 मार्क्स, इंटरव्यू विटनेस के लिए 1 मार्क्स, 2 मार्क्स हो गया। करेंगे क्या सर? बाकी 12 पॉइंट, 1 मार्क्स you will get for inspection, 1 mark you will get that you will interview the witness who have seen the accident, and then remaining 12 marks you have to take from writing active and reactive record. बैरिकेड को नहीं सुन ले। अभी बताओ ना, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, एक्शन इन्वेस्टिगेशन का स्टेप तो आपको नहीं पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आप चाहिए तो ऐड कर दो बैरिकेड का, बट बैरिकेड के लिए मार्क्स नहीं देता नेबोश इस क्वेश्चन के लिए। ओके, बट लिख सकते हैं आप चाहिए तो, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा देखो ना, एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे बोला। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे स्टेप बताया, उसमें बताया आपको ये 3 तरीका है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये गैदर इन्फॉर्मेशन क्या है? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ना। तो इसमें आप क्या पहला बात करेंगे, आई विल कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एरिया टू कलेक्ट द एविडेंस सच एज द faulty robotic arm, swarf in the floor, the wet floor. Then second point you can write down, I will interview the workers who witnessed the accident to collect the evidence. And उसके बाद 12 पॉइंट लिखना है आपको कम से कम, एक्टिव एंड रिएक्टिव रिकॉर्ड। टेल मी दिस रोबोटिक आर्म एक्सीडेंट हैपेंड, क्या क्या रिकॉर्ड चेक करोगे बताओ? 12 रिकॉर्ड आप लोग बताओ, चलो कमेंट इन द चैट बॉक्स, चलो ऑल ऑफ यू कमेंट इन द चैट बॉक्स व्हाट डॉक्यूमेंट एक्टिव एंड रिएक्टिव रिकॉर्ड यू विल चेक व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड हियर। एक्टिव एंड रिएक्टिव रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड 1 मार्क्स गिवन, चलो और बताओ। टूल बॉक्स टॉक 1 मार्क्स गिवन, रिस्क असेसमेंट 1 मार्क्स गिवन, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड चलो 1 मार्क्स गिवन, एसओपी देखोगे 1 मार्क्स गिवन, 5 हो गया। और बताओ ट्रेनिंग टीबीडी ऑलरेडी बोल दिया, बार बार तुम्हें दूंगा मार्क्स। सेफ्टी पॉलिसी देखो, चलो ठीक है दे दिया। चलो वर्क प्रोसीजर, वर्क परमिट, नियर मिस का रिकॉर्ड, वार्निंग साइनेज इज नॉट अ रिकॉर्ड, वार्निंग साइनेज इज नॉट अ रिकॉर्ड। ओके, वार्निंग साइनेज इज नॉट अ रिकॉर्ड। मैं एक्टिव और रिएक्टिव रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। फोटोग्राफ। अगर आपको एक्टिव एंड रिएक्टिव रिकॉर्ड में कुछ, इंडक्शन रिकॉर्ड, वेरी गुड इंडक्शन रिकॉर्ड। देन आप बात कर सकते हो मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ द रोबोटिक आर्म वैक्यूम एक्सट्रैक्टर मशीन, inspection record of the vacuum extractor machine, inspection record of the robotic arm, past accident record of this production line, worker complaint record। अगर एक्टिव और रिएक्टिव रिकॉर्ड दिमाग में नहीं है ना, चैप्टर 4 में जाइए, ऑडिट में क्या रिकॉर्ड एग्जामिन करते हैं, पूरा लिस्ट दे दिया एक्टिव और रिएक्टिव रिकॉर्ड का। सो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स दे देगा इंस्पेक्शन का पॉइंट, 1 मार्क्स दे देता इंटरव्यू का पॉइंट, बाकी 12 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा एक्टिव एंड रिएक्टिव रिकॉर्ड से। समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। सर जिसका एक्सीडेंट हुआ है सर उसको इंटरव्यू नहीं कर सकते? ना कर सकते ना, लिख दीजिए ना। लिखा था सर उसमें। नहीं लिखा, एक्टिव रिएक्टिव रिकॉर्ड मिसिंग था ना आपका भाई साहब। जी सर। वो देखिए जाके 12 मार्क्स जिसमें मिलेगा ना वो मिसिंग की हो। आपका और ऑर्को का दोनों का सेम प्रॉब्लम है। आप लोग विटनेस में ना एक एक बंदे का नाम ले लेके बोल दियो कि मैं इसको इंटरव्यू करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, वो सबको मिला के नहीं मैं सब लिख दिया था। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं आपको। यहाँ पे एक्टिव रिएक्टिव रिकॉर्ड पे मेन मार्क्स है। ओके, बिकॉज आप देखो ना इंस्पेक्शन के लिए आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, चाहे आप 4 पॉइंट लिख दीजिए। आपको इंटरव्यू के लिए 1 ही मार्क्स मिलेगा, बाकी आपको एक्टिव रिएक्टिव रिकॉर्ड में है। ओके, सो इंस्पेक्शन बोल दो, आई विल कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ द production line to collect evidence such as photographs of swarf and wet floor.
the workers who got injured and the workers who witnessed the accident to collect the evidence. फिर एक्टिव और रिएक्टिव रिकॉर्ड का बात कर लो. लाइक दैट 14 पॉइंट लिख देना आप. 14 के आप 16 भी लिख सकते हो आराम से. एक्टिव रिएक्टिव रिकॉर्ड आराम से आप 14-15 पॉइंट लिख सकते हो. दैट इज 4A. नाउ कमिंग टू 4B. 4B is actually based on scenario only, and here 6 marks given means 6 points you have to write on, and they're asking you to write on immediate cause. When they're asking you immediate cause, few of you are writing about lack of supervision, lack of training. Is it immediate cause? Immediate cause में क्या रहता है? Again, Sir, unsafe condition और unsafe unsafe action, unsafe condition रहता है. मैं आप लोगों को वो forklift truck का वो वीडियो दिखा के आप लोगों को ये करके दिखाया था. Immediate cause find out करके दिखाया था. Unsafe action, unsafe condition रहता है सिर्फ. उसमें अगर आप lack of supervision लिखेंगे, वो unsafe action भी नहीं, unsafe condition भी नहीं. Lack of training, unsafe action, unsafe condition भी नहीं. वो तो root cause हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको सिनेरियो में फाइंड आउट करना है क्या-क्या अनसेफ एक्शन है, क्या-क्या अनसेफ कंडीशन है. वो आपको इमीडिएट कॉज में लिखना पड़ेगा. यहाँ पे 2 लाइन में ब्रीफ करने की जरूरत भी नहीं. तो यहाँ पे देखो आराम से 6 पॉइंट देके रखा आपको. क्या-क्या अनसेफ एक्शन हो रहा है, क्या-क्या अनसेफ कंडीशन हो रहा है. ओके, क्या-क्या अनसेफ एक्शन हो रहा है, क्या-क्या अनसेफ कंडीशन हो रहा है. पहला तो यहीं पे देख लीजिए. रिकॉर्ड कर रहा है फोन से, है ना. अनऑथराइज्ड एरिया में घुस गया सर. अनऑथराइज्ड एरिया में घुस गया. अनसेफ एक्शन हो गया. बोलने के बाद भी वो उसको रिएक्ट नहीं किया, है ना. unsafe act. दौड़ रहा है. दौड़ रहा है. अनसेफ कंडीशन. ये तो अनसेफ एक्शन हो गया. अनसेफ कंडीशन में जाओ. स्वार का वर्कप्लेस में वेट फ्लोर है और साइनेज नहीं है. 6 पॉइंट हो गया. 6 मार्क्स. यस और नो? यस सर. अभी इसका सेंट्रल पॉइंट क्या कर रहा है, या क्या क्या चीज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे. मोबाइल यूजिंग. मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है. Using mobile phone. 4B. So these are the immediate cause. आ जाओ. The worker, the contractor, for using mobile phone to record the irregularity count. These are answer action. Like that, swerve from the floor, wet floor, no signage. ऐसे भी 6 पॉइंट लिखना है आपको. देख के रखा 6 पॉइंट आपको. That is a 4B. 6 marks given, 6 points you have to write down. Question number 5. Here also, some of you, I don't know what happened. I discussed in the class how to deal with indicator of safety culture type question. Yes, current batch. Can you tell me what will be the answer of this question? Question number 5. OG negative. OG minus. OG negative नहीं है इसका आंसर. Indicator, sir, indicator, just like absenteeism Negative rate, indicator, sir. accident rate. Please, this weekend, all of you Indicators of health and safety. complete the revision in this weekend. Current batch. I'm telling to you guys. I'm telling to everyone, but especially current batch. I've written how to deal with indicator type question. क्या बोला जब negative indicator होता है, all the red point is your answer. Yes, But sir. when you brief the point, then you use OG to brief it in 2 lines. So don't write OG. Some of you are writing OG in that. Will you get all the point related to OG in the scenario? No, sir. No, it's sir. not possible. And it will be very difficult. If you take OG now, it will be very difficult because then you have to take, oh, okay, commitment. You have to find out which point is about commitment. So why you want to complicate your task? I made it very simple. Negative indicator मतलब ये जो red point है ये क्या है? It indicates your safety is not good. Take all the red points, central point को heading बनाओ, उसको अपने word में लिखना है, brief करने के टाइम में OG use करके brief कर देना है. That is what you have to do. Make it simple. But because of poor revision, some of you did not follow that. इसके लिए मैं बार-बार जब भी मैं आपको फीडबैक देता हूँ, पहला जो मेल में मैं लिखता हूँ यही बोलता हूँ कि प्लीज रिवाइज बिकॉज आई कैन सी यू गाइस कमिटिंग मिस्टेक बिकॉज ऑफ पोर रिविजन ओनली. तो आपको क्या करना, 18 मार्क्स दिया आप देख रहे हो एग्जाम में, ऐसा 18 मार्क्स अगर आप खोएंगे ना फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे. वो मत करो. दीज आर द क्वेश्चन जो कि आपको डिस्टिंक्शन लाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, बिकॉज ये सारा कुछ बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर में डिस्कस किया. सो एवरी रेड पॉइंट यू हैव टू टेक कैसे लिखना वो भी बताया. इंडिकेटर क्वेश्चन आई डिस्कस इन द एफएडी सिनेरियो आल्सो. सो एक एक करके रेड पॉइंट लोगे और लेकर उसको ये कर देंगे. You have taken on the duties of the machinery workshop, health and safety supervisor, as they are away from work for 2 months. Central point क्या है, क्या चीज के बारे में बात हो रहा है? Workload. Sir, workload and absenteeism. So आप इसको वर्कलोड भी बोल सकते हो या आप इससे अगर हेडिंग बनाएंगे, if you want to make heading from this, so here actually a safety supervisor is working as a supervisor, right? So duty of machinery workshop is given to safety supervisor. So that also you can write down, or you can write down additional responsibilities, additional workload given to the health and safety supervisor. Write down. Question number 5, negative indicator. And here you see how many negative points we have identified. Probably 32. 32 we have identified. आपको 18 लिखना है. बड़ा बड़ा जो negative point इसको लिख दो कम से कम आराम से.
देयर आर टू मेनी कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज दिख रहा है, आपका वार्निंग साइनेज नहीं है दिख रहा है आपको, है ना, और सुपरविजन है, आपका पॉलिसी का प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, है ना, आप देख रहे हो ना, पॉलिसी का प्रॉब्लम है, Young worker, यंग वर्कर है, यस, इनकॉम्पिटेंट वर्कर है, कितना पॉइंट लिख सकते हो, सो मेनी पॉइंट property करना है sources. इसमें ना। ऐसा क्वेश्चन में जहाँ पे आपको 32 नेगेटिव पॉइंट दिया है, 18 मार्क्स का नेगेटिव इंडिकेटर पूछा है, इसमें 18 में 16 भी लाते आप ना तो गंदा बोलूंगा मैं, देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको एग्जाम में, बट रिवाइज करने से ही आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज ये भी डिफिकल्ट है। तो बोल दो, द health and safety supervisor has high workload because he is working as a workshop supervisor due to absence of supervisor. So like that आप 10 marks 18 मार्क पॉइंट देना, 18 मार्क्स का पॉइंट लिखना है आपको, और डेटेड पॉलिसी का बात हो रहा है, ऑल नेगेटिव पॉइंट यू कैन टेक एंड यू कैन राइट डाउन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कुछ लोग हैं जो 9 में 9 नहीं लेके आए, बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, बट क्यों नहीं लेके आए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग बैक टू माय क्लास नोट्स। The question is simply asking you which category of question is this? Question number 6. Question. क्या पूछना क्वेश्चन? ट्रेनिंग के कैसे देते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं? What information should be included in the induction? आपको क्लास नोट में ऑलरेडी इंडक्शन ट्रेनिंग का कंटेंट में डिस्कस किया हूँ, 16 पॉइंट लिख के दिया हूँ, बट वो आपको तभी होगा जब आप जाकर मेरा देखोगे। फैसिलिटीज के बारे में आप देखो, इसमें मैं ऑलरेडी आपको हाईलाइट भी कर दिया कौन कौन सा पॉइंट में आपको एग्जांपल देना, तो आप लोग मेरा क्लास नोट में जाने रहे, इसके लिए आपका कंटेंट पूरा हो जा रहा है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग का कंटेंट पूछा सिंपली, so these are the content of induction. I'm just giving you second example, and here please try to understand, आप में से कुछ लोग ना हेडिंग जो लिखते हो उसके बारे में बात ही नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर writing safety policy, you have to talk about safety policy. When you're talking about hazard, you have to talk about hazard. When you're talking about emergency procedure, you have to talk about, I will discuss emergency procedure in the induction training, I'll discuss about welfare facilities. आपको पूछ रहा है ना, एग्जाम देख रहे हो ना, क्या है ये, आपको क्या बोल रहा है, what information should be included in this induction, आपसे पूछ रहा है, तो आप वो वे ऑफ राइटिंग को भी पकड़ना है आपको। तो फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर राइटिंग, आई विल शो यू टू एग्जांपल, सपोज आई एम राइटिंग सेफ्टी पॉलिसी, some of you did not brief in 2 lines also, so I will include discussion about health and safety policy in the induction training, discussing about the objectives and target set in the policy. तो देखो मैं यहाँ पे बताया कि इसमें हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव टारगेट के लिए, कमिटमेंट के बारे में, वर्क प्लेस हैजर्ड एंड कंट्रोल्स। यहाँ पे आप एग्जांपल दो, मैं बोला हूँ इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इंडक्शन ट्रेनिंग में इफ यू गिव एग्जांपल योर कंटेंट विल बी स्ट्रांग, दैट इज व्हाई इन द क्लास नोट आई हैव रिटन, सो हैजर्ड ऑफ द वर्क प्लेस, so I will discuss the hazard of production line such as movement of robotic arm, सर इसमें हम सिनेरियो से बिल्कुल लिंक नहीं कर सकते और वेट फ्लोर cars and weight flow। आप एक भी एग्जांपल दोगे तो चलेगा, एनी वन एग्जांपल ऑफ hazard you can give from scenario। तो ऐसे आप जाके सर जैसे कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लिखा है सर, तो मैं लिख डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। पॉलिसी का बात करिए उसमें, ओके, जो आप हेडिंग दे रहे हो उसका बात तो करेंगे ना, पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बात किया हूँ। सो सिंपली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। Similarly, question number 7 is also one of the very easiest question you can expect in the exam. Yes, read question number 7. And which topic we talk about this? ह्यूमन फैक्टर, इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर। Class note में where should I go in the class notes for question number 7? ओजी सर ओजी फैक्टर में जाना OG का किसमें जाओ? OG का किसमें जाओ? इंडिविजुअल OG का फैक्टर O में जाओ, J में जाओ, कहाँ जाओ? इंडिविजुअल आई में सर OG का I was individual factor ना, so what they are telling that what is the individual factor because of which the behavior of the worker became negative. So individual factor में आप देखो, मैं ऑलरेडी आपको पॉइंट लिस्ट आउट कर दिया हूँ। कॉम्पिटेंट का पॉइंट है, फिजिकल मेंटल मैच्योरिटी का पॉइंट है, एटीट्यूड का पॉइंट है, मोटिवेशन का पॉइंट है, हाजर्ड एंड रिस्क परसेप्शन का पॉइंट है। अभी आपको सिनेरियो में भी एटीट्यूड रिलेटेड 3 पॉइंट देके रखा है, मे भी आपको कॉम्पिटेंट का पॉइंट देके रखा है, पुअर मोटिवेशन का पॉइंट देके रखा है, पुअर हाजर्ड परसेप्शन का 2-3 पॉइंट देके रखा है, ऐसा हो सकता है। आपको क्या करना है, पॉइंट को उठाना है और उसको ब्रीफ करना है, वो इंडिविजुअल फैक्टर रिलेटेड ही पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम बताया है कि नहीं बताया यहाँ पे? यस सर बताया।
They have already given that 17 years old apprentice is working. Yeah. So that is incompetent worker, right? Yes, sir. Yes, sir. Question 7. So these are the individual factors. Incompetent worker. Now I'll have to use information from scenario. I can write down the apprentice worker is young, having 17 years age, shows lack of competency. So I've used this point about incompetent worker. I'll also talk about poor physical and mental maturity. You see, we have discussed young worker. सर We have अनकम्पिटेंट वर्कर में एक क्वेश्चन था मेरा हाँ। सर एक तो हो गया इनकम्पिटेंट पर्सन बिकॉज ऑफ ही इज नॉट एक्सपीरियंस पर्सन सेकंड वन इज द बिलो ऑफ 18 एज वो भी तो हो सकता है सर जिसके उसके ड्यू टू दिस रीजन की लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से सर वो एज 17 इयर्स ओल्ड वर्कर काम कर रहा है हो सकता है इंडक्शन की लैक ऑफ सुपरविजन आपका लैक ऑफ इंट्रू भी हो सकता है सर, लैक ऑफ इंट्रू। एक मिनट पहले जिसने क्वेश्चन पूछा उसको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सतीश, प्रद्युमन, लैक ऑफ सुपरविजन ये इंडिविजुअल फैक्टर है? नो सर। कौन सा फैक्टर है लैक ऑफ सुपरविजन? ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन का सोशल फैक्टर में हम लोग सुपरविजन का बात किए। आपको क्वेश्चन में पूछा है ओ फैक्टर? नो सर। ना, आपको इंडिविजुअल फैक्टर पूछा, सुपरविजन ओ फैक्टर में आपको इंडिविजुअल फैक्टर पूछा, आपको इंडिविजुअल में ही जाना है, आप इंडिविजुअल से बाहर नहीं जा सकते। लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ ट्रेनिंग का बात नहीं कर सकते आप। आपको इंडिविजुअल फैक्टर क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन आपको क्या बोला, व्हाट इंडिविजुअल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पे आप सुपरविजन, लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ ट्रेनिंग लिखेंगे, 0 मिलेगा। आपको सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर जाना है। इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरा 5 स्टेप को टेक्निक को यूज करो, गो बैक टू क्लास नोट, देखिए क्या पढ़ाया इंडिविजुअल फैक्टर में, देखिए क्या पढ़ाया इंडक्शन ट्रेनिंग में। अदरवाइज आप ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा आई फैक्टर, आप लिख के आएंगे ओ फैक्टर, वो मत करो। तो क्या क्या बात किया, वो सब रिलेटेड जो पॉइंट दिया सिनेरियो में उसको उठाकर बात करना, सिंपल। तो यहाँ पे ऑलरेडी बात किया हमने, फिजिकल मैच्योरिटी के बारे में बात किया, young worker. So here already you have 17 years old worker. So write down 17 years old young worker has poor physical and mental maturity, causes negative behavior. मैं बोल रहा क्या चीज इंडिविजुअल फैक्टर है जिसके वजह से उसका बिहेवियर खराब हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया एटीट्यूड रिलेटेड पॉइंट बताया, यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिया एटीट्यूड रिलेटेड, पुअर परसेप्शन रिलेटेड पॉइंट भी दिया आपको यहाँ पे। सर दौड़ रहा था। Worker are working in between the machine, na? Worker was running, sir. Yeah, worker was running. That point you can write down. Then worker was working in between the machinery. Cleaning the swarf. Then one worker was one worker stopped the trolley and tried to clean the swarf when the machine was running. थोड़ा डेढ़ यार वो भी आ जाएगा सब। Argument was there. Then this one. Attitude, sir. A worker, yes, a worker with a low Negative trolley attitude, sir. in a pocket to avoid a pile of salt that has spilled across it. So write down this is the negative attitude of the worker. So the worker is trying to clean the salt and park the trolley on the walkway. There was this one. Workers sweep the swap from the machine into piles on the floor between the machines. Here, contractor worker recording the video, running on the workplace, right? Running on the workplace, shouting on. After shouting, also he did not stop. See, filming the robotic arm. Even after shouting by the worker, he did not respond. That shows negative attitude. The worker run. That shows poor hazard perception. Example देखिए, class note use करेंगे. That's it. Now coming to question number 8. Question number 8 में many of you got misguided and you try to use your IG2 in your IG1, especially the previous batch. क्या किया हो? लाइन से जो मैं IG2 में लिस्ट देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना, हेल्थ सर्वेलेंस, टूल बॉक्स टॉक, ट्रेनिंग, ये लिख कर बैठ गया हो। क्यों ना ऐसा? Yes or no? Yes, sir. Previous batch, those who tried this scenario, हम लोग क्या किया? None of you scored even 6 or 7 marks in this question because आप IG1 में IG2 यूज करने का कोशिश किया। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो आप लोगे टू प्रिवेंट द रिपीटेशन ऑफ दिस एक्सीडेंट। ये जो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे उसका रिपीटेशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द रिपीटेशन ऑफ दिस एक्सीडेंट, what administrative control you will take? That is what this question is asking. Current batch, just now we have read this scenario. Can you give me 10 administrative control which we can put in this production line to prevent this same accident again in future? Yes. Yes, sir. Yes, assessment. Risk assessment, चलो ठीक है, 1 मार्क्स दिया। और बताओ। Near miss record. नियर मिस का रिकॉर्डिंग करेंगे, वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा। चलो व्हाट इज ट्रेनिंग सर। सुपरविजन करेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग, वेरी गुड। आप देखो इंडक्शन ट्रेनिंग बराबर नहीं मिल रहा है सिनेरियो में, तो इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे, वेरी गुड। और बताओ। सुपरविजन Competent
Higher competent person. Higher competent worker. Very good. Making a good Excellent. and effective policy, sir. Very good. Revise your policy. Policy is not good now. Revise policy. 3 marks Answer हो गए. behavior. Equipment inspections. Very good. Inspection of the equipment such as this vacuum extraction, robotic arm, and maintenance also. That point हो गया. और बताओ. Improve Activity record. Improve Improve resources. communication. Okay. Consultation. Consultation, sir. Okay. Improve consultation. 10 हो गया. अभी और देखो. Appoint competent person. Appoint competent person already Improve discussed. resources. Now try to understand. In this scenario, there are few failure in you have in this scenario, right? For example. Sorry. You see, we have read the scenario and it is a manufacturing unit और यहाँ पे new technology आता है आपका process change हो रहा but did they talk about anything related to MOC management of change? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. Management of Yes, change. yes, sir. Management of change कर रहा है ऐसा कुछ बात नहीं किया. They are introducing No, sir. change but they are not managing that change. So we can write about that perform MOC management of change for this introduction of new robotic arms that we can add. We can Yes, talk sir. about. We can talk about. Here you see nobody is recording the complaint of the worker. That we can ask to improve. Since last 5 years policy is not revised, we can talk about improving the policy, right? We can talk about providing the proper supervision to prevent any kind of unsafe action at the production line, such as keeping the trolley idle or recording the robotic arm by mobile phone. So these are the points which you have to write down, which are related to scenario. आप लोग क्या करते हो IG2 में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रोजेक्ट के लिए बता दो ना पूरा हेल्थ सर्वेलेंस टूल बॉक्स स्टॉक लेकर चले गए उसमें मजा ही सिनेरियो को ध्यान में रखिए सिनेरियो में क्या क्या कंट्रोल लेना है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओके सो दैट यू हैव टू टॉक अबाउट सो दिस इज द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड आई थिंक वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन यस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड सो नाउ द करंट बैच दिस सैटरडे संडे and especially those who are writing exam on 10th of December for you complete revision of IG1 and start working with this mock test full length mock test those who have shifted exam आप लोग रिवीजन कंप्लीट करो इफ यू वांट टू ट्राई फ्यू क्वेश्चन यू कैन ट्राई बट आई विल नॉट आस्क यू but at least revise IG1 okay because from Monday when we start IG2 then every day I will give you task related to IG2 okay that is for the current batch now the last month batch those who have already booked exam okay if anybody did not complete IG2 तो आप बहुत डेंजर जोन में हो okay अगर लास्ट बैच में जो एग्जाम जो क्लास किए और प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया ना सो अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा आपके लास्ट बैच में फराज एक बंदा था ना फराज वो बंदा देखो आई आस्क्ड हिम नॉट टू बुक एग्जाम बट कैसे भी एग्जाम बुक किया नवंबर में और प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाया लास्ट डे सबमिशन तक सो वो गलती मत कीजिए जो लोग एग्जाम बुक किए अगर प्रोजेक्ट जो लोग एग्जाम बुक किया और प्रोजेक्ट अभी तक अगर नहीं किए तो कल से बैठ के सिर्फ प्रोजेक्ट करने मत बैठिए पहले जाके IG2 का पूरा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको अदरवाइज आप जो रिपोर्ट बनाओगे वो टेरेबल रिपोर्ट होगा और फिर आपका IG2 में पास करना बहुत मुश्किल होगा सो पहले जाइए और पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले जो मैं बताया हूँ 3 एक्शन को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा तब करना है अदरवाइज आप करने के बाद फिर मैं बोलूंगा पूरा पार्ट 3 कर देते फिर से पार्ट 3 करने जाओगे इतना टाइम नहीं है सो दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड IG2 आई एम फेल टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट यू हैव शिफ्टेड एग्जाम बिकॉज यू कैन कंप्लीट IG2 फर्स्ट उसके बाद IG1 में जाएंगे बट IG2 भी कंप्लीट नहीं किया तो IG1 अभी आपको IG1 करने का टाइम था आपके लिए ना बिकॉज आप लोग ऑलरेडी पिछले महीने क्लास कर लिया बट अभी तक IG2 नहीं किए देयर आर ऑलमोस्ट 10 पीपल दोज हु हैव बुक एग्जाम बट IG2 प्रोजेक्ट नहीं किया ऐसा मत करो आप लोग अपना पैसा का अपना टाइम का अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना फिर कैसे होगा बताओ ना आप लोग ऑप्शन इसलिए देते हैं कि आप प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट करो एंड देन यू गो फॉर IG1 सो वन बाय वन आपको दोनों डील करने का ऑप्शन मिलेंगे देयर आर मेनी पीपल दोज हु हैव कंप्लीटेड आल्सो so that's good because now they don't have any botheration about IG2 they only need to focus on IG1 but please get back to IG1 revision and mock test I can understand everybody will not have the same speed so maybe like you see in your batch in the last batch there are few candidates those who have already completed one full length and they have started second one also and few of them has completed second one also so everybody has different speed so no need to have any stress कि बाकी लोग दो कर लिए मैं अभी तक एक ही में हूँ वो इशू नहीं है आप अपनी स्पीड से जाइए बट कीजिए that it should not happen that you have not even started preparation or revising IG1 or writing mock test start कर लो because 10 December exam है ना so ऐसा नहीं कर सकते कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे and those of you who are writing exam on 10 December make your mind ready for a surprise because 5 नवंबर का एग्जाम बहुत इजी किया तो 10 दिसंबर आप लोग का टेस्ट अच्छा लेने वाला नेबोश ओके सो IG1 थोड़ा अच्छे करो रिवीजन मॉक टेस्ट के कुछ भी क्वेश्चन आने दो इट डजंट मैटर यू कैन इजीली यू नो सर इस बार मॉक टेस्ट के लिए सर सितंबर वाला दीजिएगा जो हार्ड वाला है नहीं सितंबर में मैं नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा मैं आप लोगों को अभी मैं जो दे रहा हूँ ना उसको कीजिए आप लोग ओके अभी आप देखो कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जो रहता है ना उस पर ध्यान मत दीजिए ओके जो नॉर्मल नेबोश का पैटर्न है उस पर चलिए आउट ऑफ बॉक्स आएगा तब भी आप आराम से कर लीजिएगा उसमें कोई इशू नहीं जैसे बाकी लोग किए आप लोग कल क्लास अटेंड नहीं किया आप लोग को कल मैं आपके जो करंट बैच इनको दिखाया लास्ट बैच का रिजल्ट दे प्रोड्यूस एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट सो एक बंदा से फेल हुआ IG1 में 2 मार्क्स से वो भी वो बंदा गलती किया आंसर बनाया कहीं और सबमिशन करने टाइम में अपना पुराना आंसर सबमिट कर दिया जिसमें उसका 2-3 क्वेश्चन किया हुआ नहीं था स्टिल दे मैनेज टू पास एग्जाम सो अभी मैं जो मॉक टेस्ट ले रहा हूँ ना वो पहले आप कर लीजिए उसके बाद आपको दुनिया का कोई भी मॉक टेस्ट करना है कीजिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहते कीजिए उसमें क्वेश्चन में फंसते आप ग्रुप में डालिए मैं रिस्पॉन्ड करूंगा बट एटलीस्ट मैं जितना ले रहा हूँ
मॉक टेस्ट, जैसे मैं वो रोबोटिक काम का भेजा हूँ, फिर मैं वो रेस्टोरेंट वाला भेजा हूँ, तो जितना मैं ले रहा हूँ उतना पहले कर लो, उसके बाद आप कुछ भी सिनेरियो सॉल्व करना करो, बिंदास करो, नो इशू, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, ओके। सो प्लीज मेक श्योर दैट you are spending quality time for your IG1 revision and mock test, because and current batch also complete your revision of IG1, because from Monday we will start our IG2, and I told you that IG2 parallel to the class you have to write on project class के साथ साथ करोगे easy हो जाएगा। You see in the last batch almost 10 candidate, they after getting 1.5 month they did not complete their project. Can you imagine after getting 1.5 month? 7 जनवरी की एग्जाम देगा, वो भी मॉक टेस्ट करना है? नहीं, मॉक टेस्ट उनको नहीं करना है, अभी रिवीजन करके खत्म करो जो जनवरी में दिया जा रहे हैं, बट आप लोग IG में रिवीजन कर लो सैटरडे संडे में, मंडे से प्रोजेक्ट करना है उनको, जो एग्जाम शिफ्ट किया उनको भी, जो एग्जाम देंगे उनको भी, ओके। ये मॉक टेस्ट नहीं करना है, ये मॉक टेस्ट अभी मत करो, जो 7 जनवरी जा रहे हैं ना मत करो, अभी आप रिवीजन कर लो IG1 का, आप लोग पहले प्रोजेक्ट करोगे, आपको 7 जनवरी ना, तो एक बार प्रोजेक्ट खत्म कर लो, उसके बाद आप IG1 में जाइए, फिर आपको भी करना है, बट अभी नहीं करना, आप लोग करेंगे, आप लोग भी, आप लोग क्वेश्चन देखिए कैसे हेडिंग दिया, कैसे प्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन को, ओके। जितना मॉक टेस्ट का मैं सैंपल से देखता हूं ना 100% like I'm doing, okay, so maybe বলেছেন অ্যাকচুয়ালি আমি স্ট্রাগল করছি যেখানে লেখা আছে বেসড অন সিনারি অনলি, সেইখানে পয়েন্ট আসছে না, মানে অনেক সময় পয়েন্টগুলো চোখে পড়ছে না। হ্যাঁ সেটা হতে পারে, ধরো 10 মার্কস কোশ্চেন আছে, তুমি 7টা পয়েন্ট পেয়েছো, নো ইস্যু। যদি তুমি 70-80% আমারও পয়েন্ট যদি আমারও সেম কোশ্চেনটা ছিল স্যার, এটা কিভাবে সেটা হয়, ইমপ্রুভ করতে পারবো সেটা স্যার? হয়, সেটা হয়, সেটা তাহলে তো তুমি স্যার আমি সেখানে ফুল মার্কস পাবো প্র্যাকটিস না। করলে হবে না। তুমি 100 মার্কস যে নেবোশে টপ করে না, দেখো আমার একটা ক্যান্ডিডেট আছে সৈফি, হি স্কোরড 88 মার্কস। আমি এক্সপেক্ট করছি যে এই বছরে মানে ডিসেম্বর 10 ডিসেম্বর তোমাদের লাস্ট পরীক্ষা আছে, ওকে, তোমরা যদি চাও তোমরা ওর রেকর্ডটা ব্রেক করতে পারো। আমি এক্সপেক্ট করছি যে ওই ছেলেটা না টপ 3 গ্লোবাল টপার হবে এই বছর ইন্ডিয়া থেকে। নেবোশে মার্কসটা মানে 80 মার্কস 75 মার্কস, এটা খুব ভালো মার্কস, ওকে। সো তুমি 100 জন্য তো ফাইট করছো না, সো ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট, ধরো যদি তুমি একটা 10 মার্কসের কোশ্চেন আছে এন্ড তুমি 60টা ইমপ্রুভ হবে কোশ্চেন সিনারিও। তো এখন তুমি বলো, এখন যখন তুমি ওই কোশ্চেনটা যখন তুমি লিখবে না, তোমার কন্টেন্টটা ইমপ্রুভ হবে, 100% ইমপ্রুভ হবে। সো আমি যদি আরেকটা স্যার যেটা হচ্ছে ফোকাস করো, আমি কতবার মেসেজ করেছি তোমাদেরকে, चाहो करते पारो, কিন্তু আমি এখন বল हाउ यू कैन ऐड पॉइंट। सो एग्जाम में आप देखो वर्ड का कुछ भी लिमिट नहीं है नेबोश में, ये मैं आपको एज एन एग्जामिनर बोल रहा हूँ, आप मेरे बात को ट्रस्ट कर सकते हो, आपका वर्ड लिमिट का कोई इशू नहीं है, ना IG1 में ना IG2 में, सो बिंदास आप लिख सकते हैं अपना आंसर। सर क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट कीजिए ना शमशाद, जो एग्जाम खुद से नहीं देते, पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी, ओके। सो अगर आप रीजन से आपको क्वेश्चन दिया 16 मार्क्स, फिर लीगल रीजन दे दिया साथ में 10 मार्क्स का, 26 मार्क्स तो यहीं पे आ गया, पास मार्क्स का 60% मार्क्स तो यहीं पे आ जाएगा, okay। So that is what revision mock test, if you do, even if you get any typical kind of paper, you will be able to manage the exam,